Hello students, welcome to my class, and today I started English language class. Chapter 16, the Tenali Raman, the second, page number 133 to 136. So let's start, students. Here the chapter 16, Tenali Raman, the second. The writer is Subhadra Sengupta. Okay. It was a cool, sunny autumn morning in the city of Vijayanagar. King Krishna Deva Raya was on the throne. There was peace in kingdom, and the markets were busy with shoppers as everyone was in a good mood. A tall, dusky man in a spotless white cotton dhoti and Angavastram strolled. Angavastram means a piece of long rectangular cloth draped over the shoulders and covering the torso. That is a traditional garment in parts of India. So एक ट्रेडिशनल गारमेंट है अंगवस्त्रम. Strolled means walked slowly in a relaxed manner out of his house. He walked slowly, looking about him with a slight smile as he headed towards the royal palace. से बहुत ही एक ऑटम अच्छा सा एक ऑटम मॉर्निंग था और विजयनगर सिटी में, जो कि वहाँ के राजा का नाम था कृष्ण देवा राया. सो और सभी अच्छे मतलब अच्छे से रहते थे वहाँ पे, कोई परेशानी नहीं थी. तो एक टॉल डस्की आदमी वहाँ से जा रहा था, वही अंगवस्त्रम पहन के. So the man went past an orchard of mango trees behind a nobleman's mansion, and then under a stone gateway that led to a narrow street. Just then he heard the high voices of children. तो वहाँ से वो रॉयल पैलेस में जा रहा था, तो तभी उसने बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी. Raised in a heated argument, something in the excited chatter made him stop to listen. It's my turn to play the king, one voice shouted. You promised I would be Krishna Deva Raya, and you can be the soldier this time. Then can I be a prime minister, Saluva Timma, instead? Another young voice protested. I don't want to be a soldier or courtier. They never have anything to say. सो बच्चे लोग लड़ाई कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे इस बात को लेकर कि मैं राजा बनूंगा, मैं मंत्री होऊंगा. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे और वो सुन रहे थे. Then can I be becoming even more curious? The man peered past the gateway and discovered a group of boys playing on a patch of grass. A tall, skinny 12-year-old had decided he was going to be the king and was strutting about, waving his thin arms. Another boy stood before him with his arms crossed, looking stubborn, insisting that he had to be the prime minister. Two smaller boys had already been made soldiers and given sticks as swords and were marching about looking important. They are planning to act in a play, thought the man. This could get interesting. तो वो देख रहे थे एक राजा बना हुआ है
दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोल्जर ऑलरेडी बने हुए हैं और एक हाथ जोड़ के खड़ा है, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने सोचा हाँ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये नाटक करने वाले हैं। Then a plump boy with large bright eyes flicked back his long hair and said, "Play any role you want as long as I am the royal court's wittiest and cleverest man." Ahem. He cleared his throat importantly. Tenali Raman, of course. With a silent laugh, the man looked around, found a large boulder to sit on and settle down for the show. He realized that the boys were acting out a day in the royal court of Vijayanagar. A sort of throne had been created using an old broken table covered with a tattered piece. तो उन्होंने सोच ही लिया था कि विजयनगर का जो राजकोट है तो वो मतलब तैयार किया है बच्चों ने खेलने के लिए। वो नाटक कर रहे थे। पीस ऑफ मैटिंग एंड moth eaten cushion. Now the boy playing the king strutted up importantly to his makeshift throne, clambered up and sat down. He sat cross-legged, wearing a wobbly crown of bamboo and tinsel, and carried a wooden sword. Then the boys playing Tenali and Minister Timma stood. एक बॉय जो था वो तेनाली का प्ले कर रहा था and Minister Timma stood on each side of the throne and the others playing courtiers stood facing them. तो और भी बाकी लोग जो कोर्ट में थे वो उन लोगों को देख रहे थे. With a royal wave of a thin arm, a street side king yelled, "Soldiers, bring in the first case." Led by the soldiers, a stocky boy came forward, gave a bow, and said doubtfully, "This is a real problem. Can you solve it, King or Your Majesty?" तो एक बच्चा आया और उसने बोला कि ये तो बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माय मैजेस्टी? गो ऑन केशवा, Krishnadeva said encouragingly. "I am here about the cow, Your Majesty." Keshava began uncertainly. "Cow? What cow?" asked the puzzled Minister Timma. "His cow in our garden, chewing all the pumpkins." "What else?" Keshava looked impatient. So कृष्णदेवा को सभी केशवा बोलते थे. So उसने कहा काऊ के बारे में है ये वाला केस. सो उसके काऊ ने सब पम्पकिन्स खा लिए, तो क्या करेंगे अभी? व्हाट काऊ? हुज गार्डन पम्पकिन्स? मिनिस्टर टिम्मा वाज नाउ बिगिनिंग टू sound a bit like a parrot, and glancing at him the king gave a quick shake of his head. तो मिनिस्टर टिम्मा जो थे वो बार बार पूछ रहे थे व्हाट काऊ, हुज गार्डन, पम्पकिन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एक्सप्लेन योर सेल्फ माई मैन. कृष्णदेवा फ्रॉन रीगरली. तो कृष्णदेवा ने बोला कि हाँ आप एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ है. वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे हैं. I mean, my neighbor's cow getting into our garden. Keshava was finally getting his words into some kind of order. Then, as he explained in more detail, the problem became clear. The neighbor never kept his cow properly tied up, and the cow would break free and keep getting into poor Keshava's kitchen garden. It had chewed up the. तो उसके बाद भी बहुत है, तो वो हम नेक्स्ट डे लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे मुद्दा है कि वो सब बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, रॉयल कोर्ट हो रहा था वहाँ पे. तो सभी
सभी वहाँ पे खेल रहे थे और ये नाटक कर रहे थे कि कोर्ट में कुछ हुआ है। कोर्ट के में क्या हुआ है ना, एक काऊ है जो उसके नेबर का काऊ है, किसी के नेबर का काऊ है, और वो काऊ वो ठीक से मतलब रखता नहीं था और वो फ्री हो जाता था और फ्री होके उसके गार्डन का पम्पकिन सब खा लिया था। तो ये ही इसी के बारे में एक केस उठा था, तो उसको ही बच्चे लोग प्ले कर रहे थे। ओके सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग दिस चैप्टर।